हेलो मित्रों, इधर आपके साथ ये इम्पॉर्टेंट दिन बिताने की मुझे बहुत खुशी है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने इम्पॉर्टेंट दिन पे 125वीं एनिवर्सरी पे आप सबके साथ हूँ। और मुझे दो बातों की स्पेशली बहुत खुशी हुई। पहली तो ये देख के कि हम इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमनिज्म एंड एनलाइटनमेंट कह के सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंबेडकर के लिए ये एकदम उनकी विचारों का समरी व्यक्त करता है। ह्यूमनिज्म एंड एनलाइटनमेंट इज़ ऑल व्हाट द अंबेडकर थॉट इज़ ऑल अबाउट। सो राइट। दूसरी बात, मैं आज सुबह दीक्षा भूमि गई थी और वो वहाँ जाके मुझे बहुत I got a feeling of the importance, the historic event that happened there on that particular day. मैंने कुल इसके बारे में किताबों में पढ़ा था, तो इसलिए वहाँ जाके उस जगह को फील करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और नागपुर मेरे को हमेशा याद रहेगा क्योंकि दीक्षा भूमि ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। बहुत बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो बहुत ऊंचा नहीं हो जाएगा? अच्छा थोड़ा सा पीछे। हाँ जी। आज की चर्चा मैं एक चाइनीज़ भिक्षु, बुद्धिस्ट भिक्षु के शब्दों से करूँगी, जो आज से कोई 1000 साल पहले कहे गए थे। चाइना और जापान में ज़ेन बुद्धिज़्म में एक ट्रेडिशन है जो पहेलियों में बात करते हैं। लोग पहेलियों में आइडियाज़ देते हैं और उसका मतलब ये है कि ये पहेलियाँ, ये पैराडॉक्स, ये पजल्स आपको और गहरा सोचने में मजबूर करते हैं। तो इसी ट्रेडिशन में एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट ने 9th सेंचुरी में कहा था कि इफ़ यू मीट द बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। अगर आपको रास्ते में कहीं बुद्धा दिखे तो आप उसे मार दीजिए। आप हैरान रह गए होंगे ये शब्द सुन के, इसका क्या मतलब? और वो भी एक भिक्षु कह रहे हैं कि बुद्धा मिले तो उसे मार दीजिए। अगर इसको आप गौर से सोचिए तो इसके मायने बहुत मायने रखते हैं। वो कहना ये चाहते थे कि अगर तुमने बुद्धा की मूर्तियाँ बना ली हैं और अगर तुमने ये सोच लिया है कि तुम ऑलरेडी प्रबुद्ध हो गए हो, तुमको जितनी विजडम चाहिए थी तुम्हें आ चुकी है, तुम सब समझ चुके हो, तो ये एक भ्रम है, ये एक इल्यूजन है। और अगर तुम इसको बुद्धा मानते हो, इस मूर्ति को बुद्धा मानते हो, तो उसको मार डालो। क्योंकि इस तरह का भ्रम, इस तरह की गलत फहमी कि तुमको सब कुछ अब ऑलरेडी तुम प्रबुद्ध हो चुके हो, ये भ्रम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपनी इल्यूजन्स को ख़त्म करते जाओ, चाहे उनको, क्योंकि इस तरह का भ्रम ऑलराइट। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आज 125 साल के बाद अगर बाबा साहब हमारे साथ होते, अगर वो दोबारा हमारे बीच में आ सकते, तो वो भी यही कहते कि किल द बुद्धा व्हेन यू सी हिम ऑन द रोड। और वो ये कहते कि तुमने मेरी इतनी मूर्तियाँ बना दी, इतने स्टैचू लगा दिए, सभी अपने आप को अंबेडकर भक्त कहने लग गए हो, पर इस अंबेडकर को जिसकी मूर्तियाँ बनाई हैं उसको मार दो, क्योंकि ये भ्रम है। क्योंकि अभी तो हमने और बहुत कुछ आगे जाना है, आगे बहुत कुछ करना है। अगर बाबा साहब होते तो वो ये कहते कि डोंट वर्शिप मी बट पे अटेंशन टू माई मैसेज, कंटिन्यू द वर्क दैट आई स्टार्टेड। और वो क्या था? कंटिन्यू द वर्क दैट आई स्टार्टेड। व्हाट वाज द वर्क? व्हाट वाज द कोर ऑफ बाबा साहेब्स थिंकिंग एंड टीचिंग? मैं आपको याद दिलाऊंगी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में लिखी गई थी, उस
बाय द वे वो किताब मेरे पर्सनली मेरे लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल रही, और मैं उस छोटी सी किताब में इतना कुछ कह गए, और उसको मैंने कई बारी पढ़ा है और मुझे बहुत उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। पर एक उनमें एक फ्रेज़ है जो मेरे दिमाग में अटका रहता है, और वो बाबा साहब ने कहा कि उनका प्रोजेक्ट है टू किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट, एंड उनका ये कहना था, अनलेस यू डू दैट, अनलेस यू किल द मॉन्स्टर ऑफ कास्ट, you can turn in any direction and the monster will cross your path and won't let you have any real reforms in any sphere of society. मतलब ये कि कास्ट एक इस तरह का दानव है, एक किस्म का राक्षस कह सकते हैं, जो आपको किसी भी सीरियस सुधार को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अगर आपने अपनी सोसाइटी में सुधार लाने हैं, असली सुधार, ऊपर के नहीं, असली सुधार लाने हैं, तो आपको इस मॉन्स्टर को मारना होगा। In order to destroy a monster, in order to destroy this institution, you have to first understand how it works, right? आपको समझना होगा कि उसमें वो अपनी शक्ति कहाँ से लेती है, वो कहाँ से एनर्जी लेती है, what does caste feed upon? Why, like a virulent strain of bacteria that develop resistance to antibiotics, this monster of caste has developed resistance to laws. जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, हमारे यहाँ लॉ रेजिस्टेंट कास्ट हो गई है। हम कितने भी कानून पास करते रहें, कॉन्स्टिट्यूशंस लिखते रहें, पर कहीं ना कहीं ये मॉन्स्टर ऑफ कास्ट हमारे रास्ते में आता है, और लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सबको इक्वली मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। इस देश में अभी भी इतने सालों कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, इतने सालों के बाद भी कास्ट की छाया सभी रास्तों पे पड़ती है। तो बाबा साहब का ये कहना था कि in order to understand how to kill this monster of caste, you first have to understand how it functions. And his own understanding was that this monster, the system of caste, feeds upon false beliefs and morally bankrupt rules and customs which are sanctified by the religion of the Vedas and the Shastras. इसका मतलब ये कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये कुछ गलत फहमियों पे, कुछ गलत धारणाओं पे आधारित है, और कुछ ऐसे रीत रिवाजों के साथ जुड़ी हुई है जिसके पीछे शास्त्र और वेद। And his own understanding was that this monster, the system of caste, ये अलग अलग उसमें चल रहे लगते हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, anyway, आप देखते हैं, शायद ठीक हो जाए। So ये गलत धारणाएं और ऐसे रीत रिवाज उनके करके ऊंच नीच हमें लगता है कि जैसे नेचुरल है। लोग पैदा ही ऊंचे नीचे होते हैं, पैदा ही अपने गुणों को लेके होते हैं, जिसके फिर उनको वही काम करना होता है जिनके वो गुण होते हैं। तो इसके करके कास्ट इनइक्वालिटीज बिगिन टू लुक नेचुरल एंड इननेट एंड मॉरली जस्ट। तो अगर फॉल्स बिलीव्स हैं जो इस कास्ट को जिंदा रखते हैं, तो एक ही सल्यूशन है इसको मारने की, कि इन फॉल्स बिलीव्स को रिलेंटलेसली क्रिटिसाइज किया जाए, इनको रिलेंटलेसली गौर से देखा जाए और उनकी गलतियों को सामने लाया जाए। And if morally bankrupt customs are what the monster of caste derives its strength from, then the only option is to subject these rules to a relentless criticism from universalistic and humanistic principles of liberty, equality, and fraternity. ये तीन principles are the foundations of Ambedkar's humanism. So the idea is कि अंधविश्वास और रीत रिवाज उनका एक ही टेस्ट, उनको जवाब देना होगा, उनको कटघरे में डालना होगा, ताकि वो जवाब दें कि
वो इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों के साथ सहमत हैं कि नहीं। सिद्धांत रीज़न के, सिद्धांत लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी के, जो भी रीत रिवाज, जो भी विश्वास इन सिद्धांतों के की जांच में पूरा नहीं उतरता, उसको हमें पीछे छोड़ना होगा। So reason, I suggest, was the core of Ambedkar's message. And it is this core that I want to talk about today. So what I'm going to do in today's talk, I will look at how Ambedkar understands reason and the centrality he gives, the importance he gives to reason in his understanding of Buddha. And then what I will do is, I will suggest that, in fact, Ambedkar makes reasoning, critical thinking, a sacred duty of Neo-Buddhists. His Neo-Buddhism, his Navayana Buddhism actually centers around the duty, the sacred duty to ask questions, not to accept anything on authority. And then I will use Ambedkar's critical reason to look at the current controversy about making Bhagavad Gita the national Granth. आपने सुना होगा कि पिछले कुछ महीनों में ये बात कही गई है कि भगवद गीता को हम एक नेशनल स्क्रिप्चर का वो दें, ऑनर दें। और इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम, ये स्कीम्स शुरू की जा रही हैं कि भगवद गीता स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि अगर हम अम्बेडकर को सीरियसली लेते हैं, अगर हम अम्बेडकर की निगाह से देखें, तो भगवद गीता में के बारे में हम क्या सोचेंगे? क्या उसको नेशनल स्क्रिप्चर का रोल देना लाजमी है कि नहीं? So before I proceed, I want to say something about the tragic fate of Ambedkarism. Today we all profess to be Ambedkar Bhakts, but the core of his project has disappeared entirely from the public discourse. Thus, on the same day when the national newspapers carried pictures of the Prime Minister Modi bowing his head before a statue of Ambedkar, the General Secretary of his party, Ram Madhav, was defending Varnashram as a noble tradition based upon aptitude and actions, with no hierarchy and no discriminations. This kind of hypocrisy is neither new nor unexpected from the Hindu right. In fact, it is not just the right, but supposedly secular nationalists like Gandhi, Nehru, Sarvapalli Radhakrishnan, they shared this romantic notion of caste as a harmonious division of labor. But apart from these political figures, I have known many of my friends who consider themselves secular and who do believe in Ambedkar's vision. They themselves think that rationalism, Ambedkar's rationalism, is somewhat outdated and even utopian and impractical. They say that there is no way that a society so steeped in faith can allow or to be receptive to a critique of its foundational beliefs. Besides, given the bewildering multiplicity of gods and traditions in India, where can we even begin to criticize religion? मेरा मतलब ये है कि even जो अंबेडकर के विजन में विश्वास रखते हैं, वो ये सोचते हैं कि रिलीजन को, धर्म को क्वेश्चन करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। अंबेडकर ने बहुत बड़ा अपने सामने एक प्रोजेक्ट ले लिया है जिसको हम नहीं कर सकते, पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में रिलीजन इतना फैला हुआ है, अंदर तक लोगों की नसों में है कि वो अपने भगवान पे का किसी तरह से अपमान होता नहीं देख सकेंगे। तो रैशनलिज्म
even though people think Ambedkar was on the right track, they think his solution of applying reason, criticizing religious thought with critical reflection and reason is impractical, is utopian. It cannot be done. And even worse, if you, there are these current, very fashionable theories which are thriving in universities and academia, not just in India, but also in the rest of the world, which are sometimes called postmodern and post-colonial theories. According to them, Ambedkar's 3 principles and his emphasis on reason will be counted as an example of a colonized mind. They will say that all these principles of equality, fraternity, ये सब तो Western है. This conflict between faith and reason is a European problem. It does not apply to India. They would count Ambedkar as a colonized mind who is somehow, can't break himself free from Western thinking. And to them, the solution would be that the Dalits and the oppressed in India should not fall for this Western idea of reason and rationality and scientific reason, but to develop their own epistemologies, their own ways of looking at the world through their own experience, through their own inherited categories. Now, this is a theoretical debate which I will not get into today. I will only cite one sentence from Baba Saheb's writings where he says, anything you build upon the foundations of caste will crack and will never be whole. It doesn't matter if you're building new philosophies, new epistemologies derived from the experience of caste, within the categories of caste, will not be able to break free from the prison of caste. Now, this talk is not about the critics of Ambedkar, but about Ambedkar's own vision. So let me briefly recount how Ambedkar came to diagnose the false notions as the root of pathology of caste. As we know, in his many debates with the Congress nationalists and the socialists and the communists, Ambedkar had come firmly to believe that social reform must take priority over political and economic reforms. Without deep and thoroughgoing religious and social reforms, the new India, he said, will be like a palace built upon a dung heap. Unless you change the social thinking, सबसे पहले तुम्हें अपने विचार बदलने होंगे, एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा, उसके बाद कोई और एक नया इंडिया बन सकता है, उससे पहले नहीं. So, the question before Ambedkar was how to bring about a fundamental social change. Let me quote a passage from the Annihilation of Caste, which brings out his basic differences from those who thought that by changing the economic base, the superstructure of caste will automatically change. Here, in this quotation, he is asking, why is it that Hindus don't interdine and intermarry? And this is what he says. He says, caste is not a physical structure like a wall of bricks or a line of barbed wire that prevents Hindus from commingling and which has therefore to be pulled down. Caste is a notion. Caste is a state of mind. The destruction of caste will require a change in those false notions, sentiments and moral attitudes towards men and things. So, तुमको अपने विचार, अपनी समझ बदलनी पड़ेगी अगर तुमने caste के prison से बाहर निकलना है. So, he says, not only do Hindus hold false beliefs about things, about nature, and about other human beings, like beliefs in guna, karma, and rebirth, these false beliefs are sacred to them. They come to them backed by the authority of Shastras. The real remedy, Ambedkar said, is to destroy the sanctity of the Shastras. Destroy the sanctity of the Shastras. Here I must say that I am utterly impressed, by the courage of Ambedkar to come up to openly say that. How many intellectuals can you point to today who will stand up and say, destroy the sanctity of what you hold sacred? So
an exceptional courage to tell the truth, that जिनको हम इतना eternal सनातन सत्य मानते हैं, वो कितनी इंसानियत पे कितनी टोल ले रहा है, कितनी उसने इंसानियत को पीछे करके रख दिया है. So then the question before Ambedkar was, who will bring about this change? कौन होंगे जो ये notions को बदलने के लिए आगे बढ़ेंगे? And Ambedkar is clear. Intellectuals will have to play a central role in this task of destroying these false notions. But intellectuals alone cannot do it. And Ambedkar never meant that it will only be बुद्धिजीवीज. अकेले बुद्धिजीवियों का काम नहीं है. बुद्धिजीवी वर्कर्स के साथ, श्रमिक लोगों के साथ मिलके इसको, ये फॉल्स नोशंस को डिस्ट्रॉय करेंगे. और उनके वेपन्स क्या होंगे, उनके हथियार क्या होंगे जिसके साथ ये ढांचा, कास्ट का ढांचा गिराया जा सके. और अंबेडकर का एक ही जवाब था, रीज़न, सोच विचार, समझ. He calls reason in Annihilation of Caste, he expands upon what he means by reason. He calls it reflective thought. And let me quote his words in full. Again from Annihilation of Caste, where he says, reflective thought in the sense of active, persistent, and careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds that support it and the further conclusion to which it tends. Active, persistent, and careful consideration of grounds of belief. ये बहुत important बात है. ये देखना है कि जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं, उनकी बुनियाद क्या है, उनकी किस बुनियाद पे खड़े हुए हैं, और क्या वो बुनियाद एविडेंस और लॉजिक का सामना कर सकती है कि नहीं. क्या वो बुनियाद, इन विश्वासों की बुनियाद, ये जो 3 प्रिंसिपल्स हैं अंबेडकर के, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, वो उनके साथ चलती है कि उनको पीछे रखती है. तो ये उनका रीज़न का ये मतलब था कि आप जो भी अपने विश्वास हैं, जिन चीज़ों को आप कहते हो कि ये सच है कि पुनर्जन्म होता है या फिर ये गुण होते हैं, इसको अगर आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो आप देखिए कि उनकी बुनियाद क्या है, एंड उसके पीछे एविडेंस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है. ये इनफ नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये एक भगवत गीता में लिखा है तो ये सच्ची होगा. ये अंबेडकर इस बात को चैलेंज करना चाहते हैं. जब वो क्रिटिकल रीज़न की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप आइडियाज़ की तह तक जाइए, उसकी बुनियाद को एग्जामिन करिए, against the best evidence that the world has, against the best evidence that modern science has, logic has, knowledge has. आप परखें उस बात को. और इस सब का एम क्या था, ये क्रिटिकल रीज़न को प्रेज करने का मतलब क्या था. एक बात इम्पॉर्टेंट है, दैट अंबेडकर जब वो रिलीजन को क्रिटिक कर रहे थे, वो कोई धर्महीन सोसाइटी नहीं बनाना की कोशिश कर रहे थे. वो एथीज़म की बात नहीं कर रहे थे. चाहे पर्सनली कई लोग एथीस्ट हैं, जो बुद्धिस्ट, जो अंबेडकराइट्स हैं, मैं अपने आप को उनमें से एक गिनती हूँ, पर अंबेडकर का पर्पस एथीज़म नहीं था. उनका ये वो एक्चुअली कंपेयर्ड टू अदर रिलीजियस रिफॉर्मर्स, अंबेडकर वॉज कन्विंस्ड कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन सोसाइटीज़ need a place for spiritual pursuits, need something that is sacred, जिसको वो sacred मानते हों. तो वो हर sacredness को ख़त्म करना नहीं चाहते थे. उनका तो ये कहना था कि religion को एक नए बेस पे रखा जाए, एक न्यू डॉक्ट्रिनल बेसिस दिए जाए, a new doctrinal basis of religion which will be in consonance with the demands of reason and with the principles of liberty, equality, and fraternity. And this, he said, will mean a complete change in the fundamental notions of life. It will mean a complete change in the values of life. It will mean a complete change in outlook and attitudes towards other people and towards nature. So what he started in Annihilation of Caste,
he brought to fulfillment in his Buddha and his Dhamma. So, Buddha and his Dhamma, unki aakhiri kitab thi, and it became almost as a Bible for his followers who followed him into Buddhism. इस किताब के बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, और मैं उसकी एक और पहलू पे बात करना चाहती हूँ. मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुद्धा एंड दिस धम्मा में जो अंबेडकर ने बुद्धा की इंटरप्रिटेशन दी है, वो इसी क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव थॉट पे बेस्ड है जो उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में शुरू की थी, जिसके बारे में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बात करना शुरू किया था. और ये दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धा as reason incarnate, as reason personified, it is my belief, it is my contention that it was inspired by the thoughts, by the philosophy of John Dewey. John Dewey, आपने शायद जो अंबेडकर की जीवन कहानी जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे, वो जॉन ड्यूई का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और उनकी कई इनफैक्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उनको कई जगह वो जॉन ड्यूई मेरे गुरु थे, जॉन ड्यूई माय गुरु, उनको मेंशन करते हैं. जॉन ड्यूई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. ड्यूई वॉज अ वेरी वेल नोन एंड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर in the United States, sometimes in early 20th century. And when Ambedkar went to Columbia University, वहाँ पे वो कौन से 3 साल के लिए Columbia University में जब पढ़े थे, 1913 to 1916 I think. That was the time when John Dewey was a professor of philosophy in the same university. And even though Ambedkar was not his student directly, Ambedkar उनके साथ पढ़े नहीं थे, but Ambedkar was deeply influenced by him. And John Dewey, important कई चीज़ों में उनकी his philosophy was very influential in America in variety of fields, from education, from philosophy, from ethics. और he had a very इनकी philosophy को pragmatism कहा जाता है, and उसका एक बड़ा क्लियर विजन है ऑफ नॉलेज, इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज. इसमें नॉलेज इज नॉट जस्ट फॉर नॉलेज सेक, नॉलेज फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज. सो लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट व्हाट ड्यूई बिलीव्ड. फॉर ड्यूई, इंक्वायरी, द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, क्वेश्चंस पूछने का जो मेथड है, it should not be understood as consisting of a mind passively observing the world and drawing from these ideas that if Dewey का ये कहना था that in order to gain knowledge, one doesn't just sit in a samadhi and watch the world. That's not how you understand truth or falsity. Inquiry, the process of gathering knowledge happens when human beings are confronted with a problem, okay? And they need a solution. And in order to find the solution, the correct solution, the correct process of inquiry is not to just meditate over the problem, but to manipulate the reality in which you are, to propose certain hypotheses, propose certain possible solutions, and test those solutions, gather the best possible evidence that you can from variety of these manipulations, and then form a belief. Rest your beliefs on the best possible evidence. Ideas are to be treated as working hypotheses and tested by the consequences that they produce. And for Dewey, inquiry was not for inquiry's sake, but for reconstruction of ethics and values. His theory of knowledge and his views of ethical values were tied to each other. He thought that ethical values were not God-given or eternal laws, but rather rules of conduct that may or may not lead to a more satisfying life for the individual in any given social context.
Values are ideas that guide conduct and are simply means to solve problems as they arise in social life. And John Dewey was a universalist, unlike the modern day postmodernist thinkers who think every society has its own epistemology, its own science. John Dewey thought that modern science is a continuation of this basic process of inquiry, in which human beings seek solutions for problems as they face in life and judge the solutions by their consequences. And he thought that all human beings are endowed by an ability, with an ability to carry on this process of inquiry. So science for him was not a Western affair, but a development of a universal potential that all human beings have. And according to Dewey, the importance of scientific thinking, of critical thinking, is that it will make you reevaluate your own conduct in life. And he believed that as science progresses, we can bring our metaphysical beliefs in accord with scientific facts and gradually base our values on these facts, not on God-given commands which were supposed to be eternally true. Now, if you read, which I tried to do, in my book that was just mentioned, Prophets Facing Backwards, when I read John Dewey, and I was already reading Ambedkar's works, I began to see close sort of parallels between Ambedkar's understanding of inquiry and critical reason and John Dewey's understanding. And and it is, I'm not proposing this thesis. Ambedkar himself acknowledges John Dewey's influence on his thought. So in my Prophets Facing Backwards, I read the two together, and I proposed in this book that Buddha and his Dhamma, Ambedkar's interpretation of Buddha and in his Buddha and his Dhamma, reflects a Deweyan understanding of Buddha. As you know that for Ambedkar, there were two pillars of Buddhism he makes these two pillars for his own interpretation of Buddha, and they are prajna and karuna, understanding and love. And I propose to you that Ambedkar's understanding of prajna, Buddhist understanding, Buddhist reason, follows the pattern that I have just outlined for you from John Dewey. I will read very quickly some parts of what I wrote about the parallels between Deweyan thinking and Ambedkar's thinking on reason. The bridge, wait a minute, prajna or understanding. Ambedkar presents the Buddha as giving permission to ordinary men and women, regardless of their station, to trust their experience over the authority of learned Brahmins and encoded in the Vedas. But at the same time, the Buddha encourages them not to treat their own experiences at any time as infallible and exempt from revision. Ambedkar interprets the mindfulness of Buddhism as Deweyan scientific temper. Everything must be open to re-examination and reconsideration, whenever grounds for re-examination and reconsideration arise. A re-examination backed by logic and proof and conducted with the spirit of freedom of thought will itself change what the inquirer will value. Not the certain knowledge of ultimate truths, ultimate reality, but reliable knowledge of here and now. Ambedkar reads the Buddha, like Dewey, as offering a method, not a doctrine, as a source of enlightenment. In simple words, for Ambedkar, Buddha's teachings, the core of Buddha's teachings lie in his method, in his challenge to authority, in his permission to people to use their own experience, use their own understanding, and not trust the sacred books.
Ambedkar presents the Buddha's own renunciation and enlightenment as an exercise in prajna, with nothing preordained or divine about it. And a Buddhist enlightenment, mindfulness and enlightenment is interpreted as an invitation to examine everything for himself, to hold nothing as infallible and permanent, including the Vedas. And in fact, as you read Buddha and his Dhamma, you come across many points in which Ambedkar completely gives new meaning to old Vedic concepts based upon this Buddhist prajna, where purity simply becomes good conduct. Nirvana becomes control over passion through knowledge and understanding. Dharma becomes energetic action. Soul becomes consciousness emerging from matter. So he redefines all the old Sanskritic terms, basing them upon a method of reason, method of inquiry, which is Deweyan in its inspiration. Prajna allows him to equate the cleaning of the mind as the essence of religion. A genuine religious attitude should simply become to act mindfully, to act with consciousness and responsibility, and to not obey any rules. So, again, to kind of summarize what I have read just now, अंबेडकर ने एक बहुत क्रिएटिव इंटरवेंशन की है. वो रिलीजन के रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने रीज़न को ही एक रिलीजियस ड्यूटी बना दिया. बुद्धिस्ट की एक ड्यूटी बन गई, एक उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का सेंटर हो गया कि वो अथॉरिटी को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे. वो so this to me is a very revolutionary concept. Religion को destroy नहीं, पर religion की doctrines को reason के accord में लाने का ये एक प्रयास है. So he set a process in motion. Ambedkar set a process in motion. And in my opinion, he was one of the very few thinkers and reformers of earlier 20th century who were trying to reform society, not by sort of bringing it under the umbrella of reformed Hinduism or reformed some Kabir Panth or some. He was trying to give a new basis, a secular humanist basis. क्या हुआ? Secular humanist basis to a new way of thinking, to a new religiosity, जिसमें central piece would be reason. I want to wrap up this my talk by bringing Ambedkar's thought to bear upon this controversy over Bhagavad Gita. As you probably know, earlier this year, the BJP government earlier last year, there was a demand to give Bhagavad Gita the status of a national granth, okay? Make it a national scripture. And there were many critics of this. People said we already have a national granth, which is our constitution. Why should we? But my point is, this is very important. Constitution is our national book. Why bring in the why bring in the sacred book of one religion, only Hindus, and that too Hindus of a certain caste who hold Bhagavad Gita to be sacred to them? Why give it the status of a national granth, national scripture? But I think once you enter this whole debate about the status of Bhagavad Gita, from Ambedkar's philosophy of Hinduism, you don't just ask, why should we have one more national granth?
If you look at it from Ambedkar's perspective, then you ask this question, whether what Gita teaches, does it satisfy the principles, the three principles, the four principles of reason, liberty, fraternity, and justice? You ask that question. You know, forget about legalistic this and that, कि इसको हम national ग्रंथ क्यों कहें, ये politics है, ये है, वो है. If you follow Ambedkar, you will ask a more fundamental question, that do the teachings of Bhagavad Gita are they in accord with the four humanistic principles that Ambedkar set out? Reason, liberty, equality, and fraternity. And Ambedkar would say, in fact, Ambedkar in his philosophy of Hinduism wrote quite a bit about this particular issue. And in fact, I would suggest that his writings on the Gita should be read very carefully. There are many today who, when they're told about Mahat Satyagraha, in which Ambedkar burnt the Manusmriti, most people laugh at you, say, so what? Who reads Manusmriti anyway? Manusmriti is all gone and dead. कौन परवाह करता है मनुस्मृति की? छोड़ो. So they minimize the importance of Manusmriti. But Ambedkar very correctly points out that Bhagavad Gita is nothing but Manusmriti in a nutshell. जो भगवद गीता कहती है वो मनुस्मृति की ही थीसिस है. तो जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकर इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज मनुस्मृति को कौन परवाह करता है, वो अम्बेडकर का क्रिटिक भगवद गीता का पढ़ें तो वो ये देखेंगे कि भगवद गीता की टीचिंग्स ये चार प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. एंड therefore it is not only legally wrong, not only constitutionally incorrect to have a holy book of one particular religion to be made into a national granth, but even on the basis of the teachings of the text, they go against the very constitution that Ambedkar gave to us. So therefore, Ambedkar's writings on religion, his defense of reason, his defense of these three humanistic principles, universal humanistic principles of liberty, equality, and fraternity, remain as valid and relevant today as they were when he wrote his book. Thank you very much. Thank you.